गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है। कैसे रोका जाए उसे? मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। गोडसे पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। मुसलमान हमारे भाई है। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब गांधी को मरना होगा। गांधी सरकार से बड़ा है। Good evening and welcome. You're watching Newsbreak with me, Sanket Upadhyay. गांधी देश से Another movie, but the same trouble. Objections. There is a new movie which is about to release later this year. This is a dialogue between Gandhi and Godse, directed by the very famous director Rajkumar Santoshi. It's based on a play written by writer Asghar Wajahat. The plot is very interesting, and this is what many would call fictional history, where Godse shoots Gandhi, and instead of dying, Gandhi survives. But then he starts his experiments with truth, and then Nehru and Patel think that Mahatma Gandhi is an impediment to their success story. So Nehru jails Gandhi, and then both Gandhi and Godse, by some stroke of luck, are in the same cell. And it's a dialogue between the two. Fictional history, creative liberty. But now a play which has been there by the name of Godse at Gandhi.com for many decades, has now been converted into a movie, and suddenly all sides have a problem. Gandhi's grandchildren have a problem, Godse supporters have a problem, and the filmmakers say, well, what can we do? We've just released the promo. You haven't even seen the movie. So Gandhi Godse, Yudh over Ek Yudh, experimenting with truth or misunderstanding art. Let's first listen in to this exclusive interview that the director Rajkumar Santoshi gave to NDTV. मेरे साथ असगर वजाहत साहब राइटर जिन्होंने प्ले लिखी थी वो साथ में थे, तो हम दोनों एक दूसरे को चेक करते थे। अगर ऐसा लग रहा है असगर साहब को नहीं मेरे जो है मैं झुकाव जो है गोडसे की तरफ जा रहा है तो मुझे टोक देते थे। उसी तरह का मुझे ऐसा लगे कि नहीं असगर साहब आप जरा गांधी जी का पक्ष ज़्यादा ले रहे हैं तो मैं उनको टोक देता था। तो दोनों एक दूसरे को चेक करते हुए ये स्क्रीन प्ले जब मैं लिख रहा था तो मैंने उनको साथ पे रखा। जो फिल्म एक बार सेंसर हो जाती है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कानून की हम रिस्पेक्ट करते हैं। अदालत में जब एक फैसला हो जाए तो अगर अपील भी करना है तो हायर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन सड़क पे उतर के अगर हमने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया ये गलत बात है। अभी मैंने सुना कि भोपाल में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट की है कि बोलते मैं गांधी जी के बारे में गलत दिखाया है, वो गांधी जी को फॉलो करने वाले लोग हैं, गांधी जी को आदर्श मानते हैं। वो लोग जमीन पे उतर आए, रोड पे उतर आए, आग वाग लगा दिया, पुतले को जला दिया और धमकी दिया है थिएटर को आग लगा देंगे। इससे साफ पता चलता है कि वो गांधी जी को जानते नहीं है। कुछ लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद भी अगर फिर रिवाइज करने के लिए बुला रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। जो भी आपने डिसीजन दे दिया भैया, इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में कोई पावर नहीं है, आपका नॉलेज आपको श्योर नहीं है कि लोग फैसला करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे। तो कल तो कानून के साथ भी होगा। अगर कानून किसी को मुजरिम करार देती है, लोग बोलते नहीं मुजरिम नहीं है, प्रोटेस्ट किया, जज ने बोला बाबा दोबारा लाओ भाई केस, फिर मैं देखता हूँ हाँ अभी ये जो है कसूरवार है। ये तरीका नहीं है। All right, the great grandson of Mahatma Gandhi, Mr. Tushar Gandhi, now joins us. Mr. Gandhi, your initial impression of the movie? The promos are as expected. I wasn't expecting anything different from what the promos suggest. It is a very clever attempt at justifying Godse's action, and but I have no objection to it. People who believe in that ideology have as much right as I have to talk about and promote the Gandhian ideology. What we have to reflect is any attempt to put a murderer on par with the victim reflects poorly. That's what I think, and no matter what they say, the promos definitely
give the impression that if not glorifying Godse, the film seeks to justify his actions and give him a kind of his acts a kind of legitimacy. Mr. Gandhi, I hope you know that this was an old play and not really a new movie in that sense. The play has been there for decades. I know about the play, I know about the playwright Wajahat Saab, and you see, the thing is that the film and the filmmaker has in the past portrayed Bapu in a very poor light, unjustified light, and a blatantly, false propagandist light in his film on Bhagat Singh, and that is where the concern comes about. Mr. Gandhi, my final question. Why aren't you actually judging a book by its cover? See, only the promo is out. The film is not out. You have not seen the film. And yet you sit in judgment. It may be. I may change my mind and opinion if I see it. Because the promo doesn't make me at all eager to go and see something that puts a murderer on par with his victim. And so it would be very difficult, and that's why I've refrained from criticizing the film. I've just talked about the apparent motives and what the promo, the kind of impression the promo has created. And I think once the promo is in the public domain, it's for us to be able to comment on it. It's not judging the book by its cover. We're just judging the cover at the moment. Okay. Right. Mr. Tushar Gandhi, thank you very much. And since we spoke about the playwright here, I also have with me Syed Asghar Wajahat. He's a Hindi scholar and a fiction writer, the playwright in this case. Asghar Wajahat Sahab, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ that even before the movie has come out, there is some controversy around it. Would you like to tell our viewers what is this movie based on? Is it the first time it is coming out in the public domain? Because I am aware that this is a very successful and famous play. देखिए, ऐसा है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि एक कहावत है कि न सूत न कपास बुनने वालों में लट्ठम लट्ठा। मतलब ये है कि फिल्म अभी आई नहीं, किसी ने देखी नहीं, और उसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसकी समझ में या जो कोई कहना चाहता है वो अपनी बात कहे चला जा रहा है। ये इंतज़ार नहीं कर रहा कि भाई फिल्म पहले रिलीज हो, उसको देखें और उसके बाद हम कोई बात करें। कोई ये भी ज़हमत नहीं कर रहा कि ये छपा हुआ ड्रामा है, इसका अंग्रेजी में भी तर्जुमा हो चुका है, ये कन्नड़ में है, ये मराठी में भी हुआ है, ये गुजराती में हुआ है। तो इसको ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल छुपी हुई थी और वो अब सामने आ गई। तो इसलिए कोई जो विवाद हो रहे हैं वो सब आधारहीन है, सब बेसलेस हैं, और सबसे पहले उसको देखना चाहिए और देखने के बाद कोई बात करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक फिल्म का सवाल है, फिल्म ने नाटक के साथ पूरा न्याय किया है। नाटक की जो आत्मा है, नाटक जो कहना चाहता है, वो फिल्म में आया है, बहुत अच्छी तरह आया है। और ये भी होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई कलाकृति जाती है तो उसके अंदर कुछ चेंज आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, तो वो भी इसमें आए हैं और उनका स्वागत है। तो ये स्थिति है अभी कुल मिला के। जी, Mr. Asghar Wajahat, thank you very much for your time. Let's just wait for a censor board approved movie to hit the cinema for people to sit in judgment and not sit in judgment even before watching the movie.